everyone, a very good evening and a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. I've had a great Diwali and a great Diwali break. Let's get back to the rhythm that we were maintaining before this break that we had of Diwali. तो शुरू करते हैं आज का सेशन बच्चों. आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मीडिया. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यू यूनिट ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मीडिया. उसकी हम कर रहे हैं शुरुआत. लेट मी ऑल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय बच्चों, वेरी वार्म वेलकम. मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट Embibe. As you can see, I have done my studies in the field of humanities and come with an experience of more than 9 years in the field of education. And I have had the wonderful opportunity to interact and teach students both online and offline for CBSE and ICSE. I specialize in English as well as social science. So that was a quick intro about me, talking about the chapter now. As I told you, understanding media is the chapter that we are doing. These are the topics majorly in which this entire chapter can be divided. Chapter बहुत बड़ा नहीं है. It's not too lengthy. It's not too heavy on information. There are a lot of things because of social media, multimedia, TV, radio that we are already exposed to. हम इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं that we are aware of many things through news, through newspapers, through TV channels, news channels and social media. हमने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे पहले ही सुना हुआ है. हमारे आसपास के लोग इतना ज़्यादा acquainted है, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को, इतनी ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन है मीडिया से, that we get to hear a lot of inputs and a lot of things already, which keeps up which keeps us aware of what we are going to read more in detail now. जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगा, बट नया बिल्कुल नहीं होगा. कई सारी चीज़ें हमें पहले से पता है. सो व्हाट आर द टॉपिक्स? इंट्रोडक्शन टू मीडिया, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी एंड सेटिंग एजेंडा बाय मीडिया. तो आज हम इंट्रोडक्शन, मीडिया टेक्नोलॉजी के साथ और मीडिया और मनी का क्या रिलेशन है, इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट. So we'll be talking about media, mass media, print media, electronic media. So you are aware of what media is. Maybe you're not very sure of its categorization. So we will do that categorization. We will understand its impact. We will understand role of TV in our lives. Why do we need money? क्यों पैसे क्यों चाहिए मीडिया को चलाने के लिए? मीडिया कैसे एक बड़े बिजनेस हाउस का भी हिस्सा बन सकता है? And what do you mean by advertisements? मीडिया से कैसे associated होती है? How do they function as a whole? Okay. So let's get started. On 20th July 1969, two astronauts, Neil Armstrong and Edwin Buzz Aldrin, walked on the moon. It was the first time humans had stepped on the moon, and it was broadcasted live on the television to millions worldwide. पूरी दुनिया ने उसे लाइव होता हुआ देखा था. They were on the moon and people on earth could watch them live on their television, which is so amazing, isn't it? कोई बाहर जाकर के चांद पे चल रहा है, बट उसे हम अपने घरों में, सिर्फ यूएस के लोग हैं तो सिर्फ यूएस में ही नहीं, हर जगह पूरी दुनिया में, इंडिया में कोई लोग बैठकर देख रहे होंगे, कोई अफ्रीका में देख रहा होगा, कोई यूरोप में देख रहा होगा. द एंटायर वर्ल्ड वाज वाचिंग इट हैपनिंग while and in the moment it was happening, right? Hi Kaustubh, good evening, welcome to this session. And that is the power of technology and in fact in media, right? Media में technology होना और media का होना, ये power, ये exposure देता है हमें. What does the media consist of? What does it do? How did it come up? How does it function now? All of that we will understand in today's session. So let's get started. Bachcho, please make sure that you have shared the video with your friends. Let them also know that they should join the session, because we're just getting started with a new chapter. And if you miss the very first part, second part becomes difficult to understand. And why not? तो अपने दोस्तों को बता दीजिए that ma'am is already live and we're getting started with understanding media so that they can also join, right Kaustubh? चलो तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मीडिया का मतलब क्या होता है? तो we've heard a lot of times, especially if you talk about बहुत simple सी चीज़ है. One thing that a lot of us share a common interest in are either the lives of the politicians or the lives of the celebrities, people who are aware, people who are known to a lot of people who are public figures in India, right? जिनको लोग जानती है.
तो मिनिस्टर्स हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस हो जाते हैं, या फिर सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, ऐसे जो भी पब्लिक फिगर हैं, उनकी लाइफ में इंसानों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना. जनरल पब्लिक लव्स टू नो अबाउट देम, रीड अबाउट देम, स्पेशली इफ यू लाइक समबडी, इफ यू आर अ फैन ऑफ समवन, you would want all the details of them. And that is how they keep saying that these days media is everywhere, the paparazzi is everywhere, and your life is just on record all the time. So we've heard this term multiple times. तो इसका अलग अलग एस्पेक्ट में हमने यूज़ देखा है. कई जगह स्टिंग ऑपरेशंस करते हुए देखा है, कई जगह जो है न्यूज़ कोई क्राइम हो रहा है उसे कवर होते हुए देखा है, कहीं रेड पड़ रहा है, कहीं पे इलेक्शंस की न्यूज़, कहीं पे किस मूवी का क्या रिएक्शन आया है, क्या परफॉर्मेंस है, कहीं पे कहाँ रैली हो रही है, कहीं पे वेदर के बारे में. So many things, so many information, so many various dynamic kinds of information has been reaching us through multiple mediums of television, of radio, of newspaper, of phone. So अब वहाँ पे मीडिया का क्या कनेक्शन है? Various forms of communication in society. So all these communications that we have been receiving will be qualifying and termed as media. ये सारी चीज़ों को आप मीडिया के अंडर डालते हो. फोन कॉल, टीवी प्रोग्राम, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. रेंज की अगर बात की जाए तो स्पैन्स फ्रॉम लोकल फेयर स्टॉल्स टू टीवी शोज. सो इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट वन थिंग. हो सकता है कि एक स्टॉल लगाओ, वहाँ पे कुछ पैम्फलेट्स मिल रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो भी मीडिया है. वहाँ से लेके एक टीवी पे जो शो आ रहा है, जो लाइव दिखा रहा है हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग को वॉक करते हुए मून पे, वो भी मीडिया है. जो न्यूज़ दिखा रही है, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, all of this, anyway from where we are receiving some information, some news, all of that qualifies as media, and hence the range is very, very diverse. ठीक है. It encompasses all means of conveying information. ठीक है. तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस 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 से हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, इट डजेंट मैटर. प्रिंट करके हो रहा है, लिख के हो रहा है, ठीक है, टीवी पे दिखा के हो रहा है, फ़ोन पे बता के हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, वो मीडिया है. मीडिया रीचिंग मिलियंस अक्रॉस कंट्रीज इन वर्ल्ड. ठीक है. जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर. तो मास मीडिया क्या हो गया? अब मीडिया बच्चे दो तरीके की हो सकती है. ठीक है. कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरीके से हो सकती है. ठीक है. जैसे कम्युनिकेशन हमने बोला मल्टीपल तरीके से होती है, तो कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकती है. एक आपका हो सकता है वन ऑन वन, और दूसरा आपका हो सकता है वन टू मेनी. या तो एक जना एक जने से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, या तो एक पॉइंट से कई सारे लोगों को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि मास को, बहुत सारे लोगों को. मेनी पीपल मीन्स व्हाट? मास, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया देन? अ मीडिया व्हिच इज रीचिंग आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, मल्टीपल पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल. जब आप एक मीडियम से, एक पॉइंट से कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, उसको मास मीडिया कहते हैं. रेडियो, the radio jockey is sitting in the radio station and doing the show. It's one person, but how many are listening? Maybe 5,000, maybe 1 lakh, you never know. कितने लोग सुन रहे हैं हमें नहीं पता, बट वो क्या है, एक पॉइंट से हजारों लोगों तक, कई सारे लोगों तक, अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन है. सो इट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू मेनी अदर पॉइंट्स दैट्स इट्स रीचिंग. तो वहाँ से इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट जो भी निकल रहा है, कई सारे लोगों को पहुंच रहा है, तो मास मीडिया का हिस्सा होगी. एक न्यूज़पेपर प्रिंट होती है, कितने लोगों के घरों में जाती है. एक टीवी का शो आ रहा है आजकल, जैसे आप कुछ भी देख लो, ठीक है, टीवी पे क्रिकेट आ रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, वर्ल्ड कप इज वेरी फेमस दीज डेज, एंड व्हेन यू ओपन हॉटस्टार फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वाचिंग इट एट, इफ यू ओपन दैट, इट विल शो 4.5 करोड़ पीपल आर वाचिंग. सो यू कैन इमेजिन, वो एक जगह पे आ रहा है और 4.5 करोड़ लोग देख रहे होते हैं. तो वो क्या हो गया? मास मीडिया हो गया. एक जगह से इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है. ऑडियंस जो है वो हमारी मासेस होती हैं, लार्ज होती हैं और डाइवर्स होती हैं, which means it's not like only one type of person is watching. Only class 7 students are watching. Only class 12 students are watching. Only college going students. It could be anyone. It could be a man, a woman,
people staying in different areas, speaking different languages, people who are educated, people who are not educated, people who know how to read, people who do not know how to read, people who know how to speak Hindi or English or Telugu or Kannada, any different languages. ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, यानी कि बहुत तरह के लोग जो है वो सब मिल करके देखते हैं. इट enables widespread dissemination of information. ठीक है, यानी कि spreading of information. मीडिया हमारी मदद करती है. मीडिया हेल्प्स अस टू मेक द इंफॉर्मेशन रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट. हाउ डू वी गेट टू नो, अच्छा अर्थक्वेक हैपेंड. हाउ डू वी गेट टू नो, अच्छा इंडिया वन द वर्ल्ड कप. ये जो भी इंफॉर्मेशन, ये जो भी इवेंट हो रहा है, जिस भी जगह पे हो रहा है, वहाँ से हमारे तक न्यूज़ कैसे पहुँच पा रही है. इट इज़, एंड नॉट जस्ट वन पर्सन, सो मैनी पीपल टुगेदर आर गेटिंग टू नो इट बिकॉज द मीडिया इज़ हेल्पिंग इट रीच टू अस. मीडिया वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये सारे लोग वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वैसे करके वो हमारे पास पहुँचता है. ठीक है, so let me take just a quick 30-second break. I'll be back. There's some issue with the voice. I'll just be back, okay? तो बाहर से लगा लूँ. Okay. Now when so many people are receiving all of these information, so many people are receiving all of this knowledge and all the awareness, naturally it is influencing the societal opinions and the perspectives of the people. जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, whenever somebody reads the news or whenever you're watching a television program, what happens? You create some ideas, you create some opinion, you have something to say about it, right? तो क्या हो रहा है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है तो पीपल आर फॉर्मिंग ओपिनियन सोसाइटी में. ठीक है, कि अरे इंडिया इज ओनली गोइंग टू विन दिस टाइम बिकॉज द टीम इज रियली स्ट्रॉन्ग, द पैटर्न इन विच दे हैव प्लेड ऑल द मैचेस, व्हाट वी ऑब्जर्व, हाउ दे हैव कम अप, हाउ दे हैव यू नो काइंड ऑफ बाउंस्ड बैक, ऐसा करके. या फिर जो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है राइट नाउ, जस्ट फ्यू डेज बैक वी हैव हर्ड अबाउट द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमस. तो हम कहते हैं ना कि हमास कि यहाँ पे अच्छा ठीक है, वेयर शुड द गाजा स्ट्रिप गो टू, वी आर फॉर्मिंग ओपिनियंस, आई वांट टू सपोर्ट पैलेस्टीन, आई वांट टू सपोर्ट इजराइल, आई वांट टू सपोर्ट दिस, आई वांट टू सपोर्ट दैट. ठीक है, रशिया यूक्रेन में पीपल आर फॉर्मिंग ऑल दीज ओपिनियंस दैट दिस इज करेक्ट, व्हाट पुतिन डिड वाज नॉट राइट, व्हाट ही डिड वाज, ज़ेलेंस्की डिड वाज नॉट राइट, और मे बी दैट वाज राइट एंड दिस वाज जस्टिफाइड. ये क्या हो रहा है? व्हेन यू रिसीव इन्फॉर्मेशन, यू लर्न न्यू थिंग्स एंड देन यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, you think what is good, what is not good, and etc. things, and then you form your opinion. And all of this was enabling us to do ultimately the media with the information and the knowledge. Correct? Chalo. So let's on that note quickly answer the question. Which of the following is an example of mass media? इनमें से कौन सा mass media का example है? Radio, television, newspaper, or all of the above? Which of the following is an example of mass media? So guys, mass media will be what? Mass media will be when this information reaches from one point to mass, to multiple people. So which out of the following do you think makes the information reach from one point to many points, to millions, to hundreds and thousands of people? Hi Kushagra, good evening, welcome to the session. Why don't you join on Embibe app? Embibe पे आकर के join कर लो session, ठीक है? And thank you so much. Okay, so let's see. Dhanush, Kaustubh, Tanmay have answered correctly and very nice. काफी जल्दी भी जवाब आ गया. Rama, I am waiting for you to answer. And the correct answer, guys, is of course all of the above. ये सारे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, सब में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एक जगह से निकलती है और कई जगह पे पहुंच जाती है. रामा ने बिल्कुल सही जवाब दिया. Absolutely in perfect timing. Good job. ठीक है. Now talking about print media and electronic media. What do you mean by electronic? Electronic basically means digital, what comes on the screen, for example, right? Print is what is written, what is printed. So printed में अगर आप सोचो बहुत simple है. Newspaper आता है हमारे पास, pamphlets आते हैं. Wherever the printing is done, the letters are printed. ठीक है, information is printed. So newspaper, magazine, they use the print technology. Whereas the TV, the radio,
the social media things, right? All of they are using the digitalization. Okay, all of them are using electronic transmission. So that is why that is electronic media. It uses an electrical device to reach to us. So how the evolution has happened? Changing technology enhances the reach and the quality. Earlier बच्चे, we were not able to print an entire newspaper. पहले hand written pamphlets होते थे, उनकी copies बनती थी, या फिर बहुत basic printed pamphlets, एक छोटी सी चिट्ठी या newspaper के नाम पे 2 paper में information that used to pass. Then from black and white newspaper, we went to colorful newspaper. From colorful, very, very blurry. If you go ahead and pick a newspaper, maybe if you try to find a newspaper, maybe 20, 30 years old, if you see the kind of pictures that were printed there, would not be very clear. It would be very, very blurry. Now the pictures that is there in the newspaper are also very clear, very vivid. ठीक है, बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे, एकदम अच्छे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा विविड, बहुत कलर्ड, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से पिक्चर्स आती हैं, बहुत बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स आती हैं. तो पहले प्रिंट करते थे हम, फिर वहाँ से मैगजीन्स पे शिफ्ट हुए. स्लोली वी स्टार्टेड हैविंग द टेलीविजन विच वाज आल्सो ब्लैक एंड वाइट इनिशियली, डिड नॉट हैव द डिश कनेक्शन. फिर वहाँ से वी मूव्ड टू कलरफुल टीवीज, वी हैड द रेडियो. ठीक है, रेडियो के बाद रेडियो हो गया, टीवी हो गया, उसके बाद इंटरनेट मिला हमें. अब वहाँ भी न्यूज़पेपर, डिजिटल न्यूज़पेपर भी आता है अब. इट्स नॉट जस्ट द प्रिंटेड न्यूज़पेपर, नाउ यू हैव डिजिटल न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. सो दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड. एंड द मोर द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, जितना ज़्यादा हमारे पास नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उतना बेटर मीडिया हम बना पा रहे हैं. द मोर बेटर टेक्नोलॉजी एंड आवर हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी वी हैव, द बेटर वी आर एबल टू रीच पीपल विथ मोर थिंग्स टू ऑफर, राइट. प्रिंट मीडिया ड्यू टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेज हैज़ बीन इवॉल्विंग, जैसे कि हमें पता है. ठीक है, चलो. न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड बुक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट मीडिया? ऑडियो, विजुअल और प्रिंट. Newspaper, journals and books are examples of which type of media? Audio media, visual media or print media? Kaustubh Rama have answered and answered correctly. Good job. Dhanush, waiting for you. Audio, visual, yeah, print, newspaper, journals. What technology are they using? They are using the printing technology, right? तो हमारे पास तन्मय ने भी दे दिया है सही जवाब, परफेक्ट टाइमिंग ने में, और धनुष ने भी. वंडरफुल. प्रिंट मीडिया, all of these are examples of print media because they basically use the print technology. They have played a very important role in shaping the public opinion for a very, very long period of time, where TV, news channels, all of these things did not used to exist. खास करके फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की अगर बात की जाए, राइट, when Britishers were here, we did not have TVs. So back at that time, newspaper is what used to inform the people of what is going to happening, what is happening, to ignite that fire of, you know, ignite that fire of nationalism, of that feeling of fighting, protection and possessiveness for your nation, that you want to fight with the Britishers. ये सारे sentiments को, emotions को newspaper fuel करता था, newspaper reach करता था लोगों तक, तब करवाता था तब लोगों को. ठीक है. Now what is the impact of changing technology on media? So we've just been understanding, अभी हम discuss कर रहे थे, that media has only gotten better and you know, easier to access and much better to experience with time because of technology. Black and white से colorful, print से digital. ठीक है, all of this is what? The changing technology. Plus it has become more easier to get your hands on it. पहले क्या था, न्यूज़पेपर सब नहीं खरीद सकते थे, टीवी सब नहीं लगा सकते थे. Now there are so many ways to reach at it that one way or the other you have an access to it. पहले सबके पास टीवी नहीं है, सब लोग न्यूज़पेपर पे नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैगजीन नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स थी. अब इतने तरीके हैं हमारे पास, फ़ोन्स के थ्रू, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर का एक्सेस इन डिफरेंट वेज,
कि अब ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है और बेटर तरीके से पहुंच पा रहा है न्यूज़। ठीक है, रेडियो पहले हर जगह आप नहीं एक्सेस होता था, कुछ लिमिटेड शहरों में था, और उन लिमिटेड शहरों में भी कुछ स्पेसिफिक चैनल्स थे, हर तरह का एंटरटेनमेंट और हर तरह का न्यूज़, एवरीथिंग वाज नॉट देयर, बट नाउ अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन इज देयर. So let's see what are the changes that has happened when media has merged, has got its support from the technology. जब मीडिया को टेक्नोलॉजी का पुश और सपोर्ट मिलने लग गया है, it has enhanced the reach, right? Modern technology reaches a larger audience. As I told you, people who cannot buy a television, ठीक है, people who cannot read and let's say get a newspaper. जैसे न्यूज़पेपर थोड़ा सस्ता होता है, but you have to be literate, and we know there like a huge chunk of population in our nation who's maybe literate but does not have the time and the bandwidth to buy a newspaper and read it. ठीक है, न्यूज़ और टेलीविजन फिर महंगा हो जाता है, टीवी इज comparatively relatively expensive. So you get phones. Phones is something that is serving as multiple things. So with the technology, we know that news channels and everything has come on the phone as well. Newspaper has come on the phone as well. So because of which more number of people, everyone is walking with the media in their hands in today's date, right? तो ज़्यादा लोगों तक reach बढ़ गई है, quality better हो गई है, sound, images. As I was telling you, newspaper आप 20-30 years पुराना उठाओगे, so the pictures would be blurry. But if you pick it today, the dimensions of the picture, the quality of the picture, the clarity in the picture is great. आप न्यूज़पेपर में भी अच्छे से देख सकते हो कि अच्छा ये कितना साफ फोटो है, आपको सब सारी डिटेल समझ आती है. आज से 20-25 साल पहले नहीं आती थी. इट यूज्ड टू बी ग्रेनी, इट यूज्ड टू बी ब्लरी, राइट? ग्लोबल कनेक्टिविटी. We know that it is the television which is not letting us have any barrier and is also exposing us to the world. It is not just informing us about our local news. It is not just informing about our own country. It is telling us about Russia. It is telling us about Ukraine. It is telling us about the Palestine issue. It is telling us about Israel. It is telling us about what's happening between US and China, and how economy is growing where, how economy is not growing. ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी जो आपकी न्यूज़ की रीच है, ये सब हमारे पास पूरी दुनिया से कैसे पहुँच पा रही है? बिकॉज वी हैव द टेलीविजन, वी हैव द इंटरनेट, वी हैव डिफरेंट मीडिया विद द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टिंग अस टू द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, फॉरेन कंटेंट वाया टीवी इज ऑल्सो रीचिंग अस. जैसे कि हमें पता है कि एनिमेटेड सीरीज जो है जापान से, आई वॉच अ लॉट ऑफ कोरियन ड्रामास. दीज डेज यू विल सी गर्ल्स ट्राइंग टू get the hairstyle or follow a skincare or wear clothes like the Koreans do, because why? Their movies and their drama series are reaching us. A lot of people are great fans of animations, which is an origination from Japan. We watch a lot of series which has been created in America, in Britain. Okay? Similarly, Indian movies, Indian songs, Indian TV series, it's reaching out to different people in different parts of the world. How is it happening? It is because of this new technology, or because people have started watching these movies and TV series. You like the characters over there. You like how they speak, what they eat, what they wear. It's basically a depiction of the culture of that particular nation where these movies or these series are created or the songs are created. So when as a viewer, you become a global viewer, you watch it, you get a cultural influence on yourself. मैं अगर किसी अमेरिकन सीरीज़ को देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कैरेक्टर और सब कुछ, तो मैं शायद उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करूँ या बात करने की कोशिश करूँ. वैसे ही कोई इंडियन कुछ देख रहा है, उसे पसंद आ रहा है, तो दे मे वांट टू वेयर इंडियन टाइप ऑफ क्लोथ्स, गेट द हेयर एंड द मेकअप लाइक दैट, और स्पीक लाइक दैट, सिंग लाइक दैट. तो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी जो है, कल्चरल इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो हैपनिंग वेरी वेरी एक्सटेंसिवली. इट इज अफेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड चेंजिंग द मेकिंग दैट मेक resulting in that make shifts in how people are talking, behaving, living in general, what they are eating in general, because of the exposure from this media which is happening on a global level. है ना, आजकल हम बहुत देखते हैं कि ये ramen and what do you say, bibimbap and kimbap, all of these things are becoming very famous. All of a sudden, how come people are loving so much of Asian food? It existed always. तो अभी हमें पता चल रहा है because of all these series and movies that we are watching, the news that we are watching, it's reaching us. तो अब हमें भी मन करता है कि हम भी ट्राई करें कि यार if these people are having this, it looks very interesting, I would like to try this food.
So that is the media that is influencing you with the culture of a different part of world, and you want to try it. And similarly, they watch something. Just few days back, I was watching this American guy who is talking very well in Hindi, and that too in the Bihari accent, right? And he had in fact cooked some Bihari food as well. Why is that? Because he's got inspired, maybe because of travel or the media, and he's trying to follow what people do over there. So that is the power of media, that is the influence culturally that is being created. Okay. देन ऑफ कोर्स रोल ऑफ टीवी की अगर बात की जाए तो अभी इतना सारा लेक्चर जो हमने, इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, वो किस पे था? टीवी की कनेक्टिविटी पे था, राइट? टीवी हेल्प्स अस कनेक्ट मोर देन न्यूज़पेपर एंड रेडियो बिकॉज दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ एरिया. टीवी पे जो आ रहा है इज नाउ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, एनीवन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ग्लोबल लेवल पे. हेंस पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड. डिस्टेंसेस जो है श्रिंक कर गई हैं, है ना? you're watching movies and series and songs, listening to all of those from US, from Britain, from different Asian countries, from Africa, wherever, right? तो क्या हो रहा है? पूरी दुनिया अब एक करीब आ गई है, कनेक्टेड हो गई है. they are all intermingled together. सैटेलाइट ट्रांसमिशन की वजह से we are enabled to view international news and entertainment. there are different channels like Star Movies, HBO, ठीक है, ऐसे अलग अलग चैनल्स है. दीज डेज आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ टीवी बट वी हैव अ लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. हर एक जगह से अब क्या हो रहा है, हम किसी भी देश का कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं. वो क्या हो रहा है, अब हमारे लिए रिजल्ट कर रहा है डाइवर्स लोकेशन फॉस्टर करने में ग्लोबल अवेयरनेस. सो बेसिकली एवरीवन इज अवेयर. आई नो हाउ अ पर्सन स्टेइंग इन अ कंप्लीट डिफरेंट पार्ट एंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड stays, dresses, speaks, eats. So I'm aware of their culture. Similarly, somebody staying in a very different part of the world is aware of my culture. Okay, how I speak, how I eat, because they have watched Indian shows. So imagine, for example, very simple, imagine sitting in India and witnessing a storm happening in Florida through live television broadcast, right? We have been aware of when a cyclone, when a storm, when a typhoon, something comes and hits and how people are affected. ठीक है, नेपाल में अभी अर्थक्वेक आया, कितनी ज़्यादा तबाही हुई, वो सब हमें कैसे पता चल रहा है? हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम सिंपथाइज कर रहे हैं बिकॉज द मीडिया हैज़ कनेक्टेड अस, राइट? ओके. Which of the following enables viewing international news and entertainment? कौन सी वो हमारी मीडिया का सोर्स है जो बड़े आराम से हमको इंटरनेशनल न्यूज़ का, एंटरटेनमेंट का एक्सेस देता है? रेडियो, टीवी और newspaper. Which of the following is that medium which easily gives us access to the international news and entertainment? Okay, I think everyone has answered. Wonderful. Dhanush, Himadri, Kausab, Rama and Tanmay. Wonderful. The correct answer is TV. TV जो है हमारा access पूरी दुनिया का एक दूसरे के लिए खोल देता है, globally जो है associate करता है. Now the thing is that we have been talking about how technology has helped media, how important media is in general, etc. Right? But one thing that we know is that we still have a very, very long way to go. हमें बहुत सारे चेंजेस अभी भी करने हैं, हमें बहुत कुछ बेटर करना है. वी नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, इन डिफरेंट वेज टू मेक इट ग्रो. स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर खास करके इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी भी हमें और पैसा और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है टू इवॉल्व द मीडिया दैट वी हैव, टू मेक इट बेटर देन हाउ इट एग्जिस्ट्स, राइट? So expensive technologies like high costs for TV studios, equipment and satellite transmission is something that we can, there's always a room of improvement over there. हमारे पास ऐसे है कई सारे टीवी चैनल्स, कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स, ऐसे मीडिया हाउसेस जहाँ पे they have the perfect technology, absolutely up to date technology. If you talk about the studio, if you talk about the cameras, the equipments that they're using like the mic, everything is top notch.
but still there are so many other places. It's just counted, you can count it on your fingers. गिने चुने ऐसे channels और आपके media houses हैं. There are much more media houses which needs to build on this, and that is where we need money. That is where investment in the field of media is required. Because in the next session, we are in fact going to talk about this, that how media is so very important for a democratic nation. Democracy में media कितना बड़ा role play करता है. इसलिए मीडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो मीडिया ग्रो करेगी, बेटर तरीके से हमारे पास जो है रीच आएगा न्यूज़ का, इन्फॉर्मेशन का या एंटरटेनमेंट का. एंड दैट इटसेल्फ हेल्प्स बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन. आप एंटरटेनमेंट अगर बहुत अच्छा सेल कर रहे हो, बहुत मूवीज़ हो गई या आपके एंटरटेनिंग सीरीज हो गए, सीरियल्स होते हैं या कार्टून्स होते हैं, ये जब आप सेल करते हो दैट मेक्स मनी विच इज़ ऑल्सो वे ऑफ बिल्डिंग द इकोनॉमी. देश में और पैसा बढ़ाने की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता है. सो वी नीड टू स्पेंड मोर इन मीडिया एंड गेट द एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट हाई टेक, मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी ओवर देम. ऑनगोइंग एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम क्या होती है? चेंजिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअल इन्वेस्टमेंट. सो इट्स नॉट लाइक वी हैव नॉट पुट इन मनी राइट नाउ, but technology is changing every day. For example, today I bought iPhone 10. मान लो आज से 4 साल पहले किसी ने iPhone 10 लिया बहुत सारा पैसा दे करके, ठीक है. अब क्या हो गया? Within a year iPhone 11 came, another 12 came, another 13 came, another year 14 came. Now within 2-3 years, the amount of money that you have put in, another complete new technology has been introduced. Similarly, in cameras, in transmission, in सारे equipments में नई नई technology introduce होती रहती है. Maybe you put in a lot of money, you bought something today, you have done an investment, but a better and a much required technology has been launched within 1.5 years. You may not want to invest in it, but it will only improve the whole experience and how the execution of everything is happening in the field of media. तो टेक्नोलॉजी क्या है, हर दिन इवॉल्व होते जा रही है और उसके साथ बने रहने के लिए हमें भी बढ़ते रहना चाहिए और होगा, ठीक है. देन वी नीड टू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, राइट, द न्यूज़ चैनल एंकर्स, द टीवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल, द कैमरामैन, द पर्सन हु इज वर्किंग विद द माइक एंड द साउंड एंड द वीडियो, इतने सारे लोग हैं. So how do we ensure that we have enough resources to work here? A lot of times you may not easily find people saying that yes, I want to work in this field, this is what I want to do. Why? Because probably there's some challenge with the money that they are earning. शायद enough पैसे नहीं मिल रहे. तो वो भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना होगा, that how the payment is done to the workforce. ठीक है, workforce यानी कि the working people in this field. So payments for news readers, technicians and production crew also has to be taken in mind and also has to be proper. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम कुछ लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं, we can see how a media house works. We definitely feel that there can be better technology, better equipments, better systems given to the people working in here, right? अब अगर बात की जाए मीडिया एज अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, बट a lot of times you'll find there are some newspapers, news channels which are really big, very popular, earning a lot of money. But the thing is that they're not independent media houses. वो सिर्फ वो न्यूज़ चैनल, वो सिर्फ वो न्यूज़पेपर अकेले एक कंपनी नहीं है. इट मे बी पार्ट ऑफ सम अदर वेंचर, इट मे बी अ पार्ट ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिग एंड दे जस्ट हैव ओपन्ड अ न्यूज़पेपर हाउस or a news channel house or a TV channel house, something like that. So most media outlets are actually seen to be or found to be a part of larger companies. बड़े बड़े कंपनी का एक हिस्सा होते हैं. There are people who are involved in multiple businesses, तो ये उनमें से एक business होता है. When things like that is happening, there is a high probability that a lot of attention is not paid to this, or really the urge to grow it bigger. इसको बड़ा बनाना है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगानी है, ज़्यादा उसमें पुश देना है, इन्वेस्टमेंट देना है. That doesn't come as much because the main source of money would probably be the bigger company. So media requires constant funding because technology, workforce, everything has to be updated. आपको नए लोग चाहिए, आपको young blood चाहिए every now and then who can do the running on the ground. Then you need experienced people also. You have to pay them for their experience. You need the technology, you need the equipments. So it's not कि एक बार investment कर दिया हो गया. The investment in the field of media is ongoing thing. हर थोड़े थोड़े दिन पे, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको उसमें पैसे डालते रहना होता है.
मनी जनरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, रेवेन्यू थ्रू एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, एक न्यूज़पेपर जो है वो हमें कितने का मिलता है? आई एम नॉट श्योर दीज डेज हाउ मच. क्वाइट सम टाइम बैक इट यूज्ड टू कॉस्ट 3-4 rupees वन न्यूज़पेपर. I think these days they probably are selling it for 6 to 8 rupees maybe or maximum 10 rupees. मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 नहीं होता होगा, 6-8 रुपए में मिलता है एक न्यूज़पेपर. एक बंदा 8 रुपए दे रहा है. 8 रुपए आप अगर हर दिन के दे रहे हो तो आप कितना दे रहे हो? 30 दिन में आप 8 से 10 रुपए दे रहे हो, तो 400-500 रुपए मैक्सिमम एक हाउस होल्ड से निकलता होगा. इफ़ यू डू द मैथ इट्स नॉट इवन 300, इट्स नॉट 400 से कम ही है, बट वैसा. तो फिर आखिर ये न्यूज़पेपर्स कैसे पैसा कमा रहे हैं? या व्हेन यू आर वाचिंग द टीवी चैनल, हाउ आर दे रियली अर्निंग द मनी? आई एम जस्ट वाचिंग इट, आई एम नॉट पेइंग टू देम टू वॉच एनीथिंग. These days with the OTT platforms, चलो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, but what is the subscription that you're paying? Maybe 1,500 rupees for an entire year. Is that enough for them to make so much money? Of course, the scale matters, but not everyone is paying. So the revenue that they basically get is, न्यूज़पेपर में आप देखोगे बहुत सारे एड्स होते हैं. फर्स्ट पेज पे, बीच में, आखिरी पेज पे, छोटा एड, बड़ा एड. So people who want to put in their ads, they buy that space, and the bigger and the better space, the more money they have to pay to the newspaper publication. Similarly, TV पे बहुत ads आते हैं. अब आप irritate होते होगे कई बार देखते देखते ये ad क्यों आ रहा है यार? ठीक है, जब हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो वहाँ पे ग्राउंड पे कितना कुछ ad डला हुआ है, या मैच के दौरान ad आता है. Why are people showing this? Because that is how they are earning money. ठीक है, तो किसी अगर टीवी चैनल पे आप कुछ देख रहे हो, बीच में जो एड्स आ रहा है, वो एड रन करने के लिए जिनकी भी कंपनी है, उन्होंने वो टीवी चैनल को या प्रिंट करने के लिए न्यूज़पेपर में, उस कंपनी ने उस न्यूज़पेपर को बहुत पैसे दिए हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ दे अर्न मनी, द मेजर सेक्शन. एंड दैट इज़ वाई दे नीड मोर एंड मोर पीपल टू वॉच इट, बिकॉज द बिगर ऑडियंस यू हैव, the bigger reach the advertisement company has. The company who is trying to advertise, they have. तो जितनी आपकी ऑडियंस होगी उतने लोगों तक उनका ऐड पहुंचेगा, उतने ज़्यादा वो आपको पैसे देंगे, एंड दैट इज हाउ दे मेक मनी. ठीक है, हिमाद्री, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे. इफ मीडिया हाउसेस डू नॉट गेट मनी, हाउ विल दे पे देयर पीपल? हाउ विल दे गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? हाउ विल दे बी अप एंड रनिंग? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं. वी नीड फंडिंग, राइट? प्लस वी आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग दैट इन ऑर्डर टू रीच मोर पीपल, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ digital or printed material that you're sending to your audience, you need to be updated with the technology, and all of that is expensive. So they need funding, right? Plus, it's not a pro bono thing that they're doing. They're not doing it for the betterment of the society as such. There are so many media houses that are in the business to make profit. So funding to chahiye so that they're earning well, they get the motivation to work more. Okay? Himadri, is that clear? So frequent ads during TV shows or sports events, that is why you see this, because that is how the money is generated for these media houses. ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर दो. मोस्ट मीडिया आउटलेट्स आर पार्ट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? ज़्यादातर मीडिया हाउसेस जो होते हैं वो किसी बड़े लार्ज कंपनी का हिस्सा होते हैं. क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर दिया टू आंसर. एक ही बच्चा रह गया है. काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइज. आफ्टर दिस वी विल बी वाइंडिंग अप द सेशन. Okay, let's see. So Himadri, perfect answer, absolutely perfect timing, good job. Dhanush, Kaustubh, Rama, तन्मय ने भी जवाब दे दिया है, दिया ने अटेम्प्ट लिया है. perfect. Okay, the correct answer is that it is absolutely true. A lot of times it is a part of another business, right? Rama, yes. Movies भी क्या है, मास मीडिया का ही हिस्सा है ना, उसी के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है. ठीक है,
सो एड्स क्या होती हैं बच्चे? एड्स वी हैव सीन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो प्रचार होता है. These are basically information about different products in a very attractive way to lure, to attract the reader, to attract the audience to buy it. The more you buy, the more advertisement is getting successful, right? And we see a lot of ads a lot of times which make us intrigued to buy that product. Ads देख के होता है. तो ads कहाँ आती हैं? Newspaper, magazine, you may see billboard, a board hanging on the road, or maybe in the news, on the TV channels, etc. राइट. सो रेवेन्यू जो है मीडिया हाउसेस का वो एडवर्टीजमेंट से आती है, वी हैव सीन. ठीक है. एड्स रिपीटेड टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. इफ यू आर वाचिंग अ टीवी शो और मे बी अ मूवी और अ मैच, एनीथिंग, you will see same ads are being repeated in maybe 1 hour. One particular ad has been shown 5 times, 6 times, every now and then. It irritates us sometimes. But a lot of times, maybe you see it so many times because it's repeatedly occurring on your screen or in front of your eyes, you end up trying it. तो रिपीट करने का तरीका क्या होता है, क्या पर्पस होता है? कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर के इंप्रेशन को चेंज करना, एंड टू लीव एन इम्पैक्ट, टू लीव एन इम्प्रेशन ऑन देयर हेड. सो दैट इज वाई आपको रिपीटेटिव बहुत दिखेंगी एड्स इन नेचर. ठीक है. टीवी में जैसे हम देखते हैं यूजुअली बिटवीन स्पोर्ट्स, मूवीज और शोज, बीच में a lot of ads are shown to us. The idea is very simple: to trigger the viewer, to prompt the viewer to purchase the product that is being shown in the advertisement, to attract the viewer to buy the product. ठीक है. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर दो. The popular way of media to earn money is through advertisements. Is this true or is this false? It's a very simple question. मीडिया हाउसेस जो है ज़्यादातर पैसे बनाती हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू. ये ट्रू है या ये फॉल्स है? Dhanush, Kaustubh, Tanmay have answered absolutely correct, and have been, it seems like very fast in answering. What about others? आदित्य ने भी काफ़ी जल्दी जवाब दे दिया है. हिमाद्री हैज़ आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इन परफेक्ट टाइमिंग. दिया एंड रामा, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज. मोस्ट ईजिएस्ट एंड पॉपुलर वे for media to earn money is through the ads. Diya has also answered absolutely correct, perfect timing, and this statement is absolutely true. ठीक है, ये statement बिल्कुल true है. That is their source of money. ads से ही पैसे कमाती हैं media houses. ठीक है. So let's quickly summarize. We saw media क्या है, evolve होती गई है. Media is basically when the medium through which we receive information, news, access all of these things. एंटरटेनमेंट. ठीक है. मीडिया जो है कम्युनिकेशन, आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आती है. 1 to many इज मास मीडिया. इट हैज़ मूव फ्रॉम प्रिंट विच इज़ न्यूज़पेपर, मैगजीन, टू इलेक्ट्रॉनिक नाउ विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी विथ टीवी एंड रेडियो. इसका इम्पैक्ट हमने देखा है दैट टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स एक्सपैंड रीच, इम्प्रूव द क्वालिटी, हेल्प अस कनेक्ट ग्लोबली. द मोर टेक्नोलॉजी हैज़ कम, द मोर ग्लोबली कनेक्टेड वी हैव बिकम. टीवी का रोल हमें पता है बहुत ज़्यादा, हमें कल्चरली एक्सपोजर देता है, इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करता है, कनेक्ट करता है. फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कोर्स मीडिया हाउसेस हैव बिकॉज they have expensive technology being used which is constantly evolving, so they need to keep up with the technology. Their cost is ongoing and they have to pay the people working from them, so they need significant funding. So Himadri, you had asked, right, this one point can be broken in 3 points and you can write the 3 marker answer from this कि क्यों चाहिए, उनकी financial needs क्यों हैं. Big business houses is mostly what runs small media houses as a part of large corporation due to the high costs, and ads are the major and the main source of revenue. इसीलिए frequent ads हमने देखा है टीवी में, न्यूज़पेपर में, and to repeat the ads is the scheme that is basically done by the advertising companies to leave a longer impression or ultimately influence the consumer to buy the product. ठीक है. So as Armstrong stepped on the moon, he said, that's one small step for a man, one giant leap for a mankind. Many still remember these words today thanks to the media that brought these reverberating words to our doorstep. The media holds much power in our lives, but what role does it play in the democracies
that we'll understand in the upcoming session. So please make sure that you go on the Imbibe app or website. Take a select your class and goal and select the session and register yourself. Media and democracy is going to be our next session. उसके पहले हम एक quiz session भी करेंगे. आप इन सब के लिए register ज़रूर कर लेना. And do not forget to connect with us on the Telegram channel, you guys. This is the link and this is the QR code. Okay. So thank you so much for being here. I will see you guys super soon in the next session where we'll be doing a super quick quiz for our entire syllabus revision and then followed by another session on media and democracy. तो वहाँ मिलती हूँ मैं आपसे. Till then, have a great evening. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves. Stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.